some of our colleagues will be joining us with shortly. But I believe till then we can sort of just get a discussion going with some of the initial housekeeping, and let me sort of briefly explain you the agenda. So today we do have an almost 1.5 hour session where we'll initially be joined by Dr. Hassan Daud Bhatt for his initial keynote. And then they sort of, given the context and the subject of the theme, we do have a scene setting presentation from Mr. Ahad Nazir, Associate Research Fellow at SDPI. And after which we'll be going towards more of consultative discussion and kind of a panel discussion, but more in a facilitative manner and back and forth discussion manner, in which will be joined shortly by Mr. Johar Salim. He's the president of Institute of Regional Studies. We already have been joined by, thank you so much, Dr. Saab, Dr. Faiz Mohammad Kakar. He's a former Minister of Health and Environment, Government of Balochistan. We've also been joined by Mr. Nurul Haq Baloch. He's the chairman of Gwadar Port Authority. And from the Balochistan Board of Investment and Trade, will be joined by Ms. Hana Abkasi very shortly as well. But most importantly, we're very again pleased to have with us Dr. Kuratullain Ari. She is the founder and director of Institute for Development Studies and Practices. And I believe many of you would already be aware of such wonderful work which she has already done. So while I was just, thank you so much, Dr. Saab. Thank you for joining us. We're just sort of giving the initial introduction, and you have joined us, so we'll be shortly coming to you. But just before going towards the technical discussion, let me say some of the housekeeping rules. Today's session is being live streamed on YouTube, Facebook, LinkedIn, and X accounts of SDPI and SDTV, Sustainable Development Television. We have people joining us both in person as well as online. And those who are joining us online, if you wish to make any comment, pose any question, you can either click on the raise hand option. You can also sort of post your question in the Q&A or the chat box, and we'll pick it up directly from you. And we'll have a dedicated time slot of roughly around 20 minutes for the Q&A and the back and forth discussion. So the people sitting here in person can ask their interventions during that time as well. Once the discussion is over, we'll definitely be preparing a very short brief coming out of it that will go into the further development. So now just to initiate the formal process, Dr. Hassan, Dr. Saab, are you with us? Yeah, let me also invite Mr. Johar Salim. Sir, if you can please join us on the stage. Yeah. Dr. Hassan, are you with us? Gigi, I am with you. Ji, thank you so much, Dr. Hassan. With this, let me also sort of welcome Mr. Johar Salim, President of Institute of Regional Studies. So, sir, we was just sort of doing a scene setting for the discussion. And from there, we'll again be going towards the first setting and the keynote address by Dr. Hassan Daud. But I believe everyone who has worked around the CPEC as well as the Planning Commission very well know Dr. Hassan Daud, but for such an instrumental work has been doing. So Dr. Hassan will initially be coming to you for your presentation, and I believe that would be along with Ahad Saab's intervention, that would be one of the guiding areas from where we can take up the discussion. So thank you once again for joining us. Dr. Hassan, we can see is joining us online. So yes, Dr. Hassan, with this, over to you. Thank you. Thank you very much. Thank you, thank you for being here. I'm in China right now, so unfortunately I could not join and have the honor of your presence, sir. But please accept my felicitation from Beijing right away. One of your favorite cities, I know. So, and also Ahad, Assalamu alaikum. And can I share my presentation, please? Ji, Hamza, if you can, yes, it's all set. Yeah. So is it visible to you? It is visible. If you can just turn on the slides screen, manner. Yes, हमने इसे full screen कर दिए. मैंने full screen कर दिया, अब आप कर दिए. जी sir, please go ahead. Okay, so this discussion today only involves Pakistani, or do we have Chinese participants also? Dr. Hassan, we can go in Urdu. We do have, as for this one, we do have the Pakistani audience. Yes. Okay. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much. I will be presenting
my short presentation, which I gave to recently to uh, Balochi students in Quetta. I was asked to be there, and so I think, and this picture in front of you, on the right is the Gwadar airport, and on the left is naturally Shanghai or Shenzhen. I mean, why I'm showing you this photograph is based on this fact that I will be highlighting it because I also believe, and it's a fact around economic order is that to become a dynamically growing high income economy is a dream of almost all developing countries and regions. And I also believe sitting in Beijing, I can safely say uh, that developing countries can grow rapidly in 3 to 4 decades, overcoming the low income trap, which of course Balochistan is in, and our country is also in. We are also, and I'm setting the stage for the discussion that I'll have shortly. I also believe that we live in an age of misinformation and disinformation where anti-globalization and misinformation is challenging the progress. So there is an anti-development agenda or narrative being built around with different political setups. But I think now what has happened in New York recently in the mayor election and what is happening globally, I think we will see more infrastructure led growth coming up very shortly. But that has to be fair, that has to be equitable, and also that has to be inclusive in its growth. I also believe that geography, large population, and connectivity are key endowments, and this is set in Global Economic Order for 2015, which Pakistan also stands in the top 30 economies of the world, and that's based on these endowments that we have, and perhaps Balochistan is central to that point also, and also we need hard and soft infrastructure to be there. But more importantly, ladies and gentlemen, Pakistan is going to be 100 years old in less than 30 years, with its population going to be 250 million and Balochistan around 24 million. This population also requires a 1.3 million jobs annually, going to 5 million by 2050, and Balochistan around 250 100,000 jobs per year. So if that does not frighten us, then what will? That does not actually tells the government to take pragmatic measures. I think nothing else can happen. And in this respect, regional connectivity is extremely important, and the development that we are seeing around that. We are all aware that Gwadar remains central as part of Balochistan and as a regional hub for as a gateway. And we've been talking about this for almost several decades, as much as China's development 3 decades. We've also been talking about Gwadar and how this can be leveraged uh, development and development of the entire region. So, looking at Balochistan at a glance, we see that it covers around 44% of land area of Pakistan. So that means that, if you consider this with countries where there is less land available, Balochistan itself is almost a country, and it provides great opportunity. It is also it has one of the largest wind corridor which has not been tapped as yet. It has I'm not too sure, but as per the data available with Balochistan Board of Investment, it also has shale gas reserves. It has 40% of country's livestock. It has competitive labor, though less in size, and of course it has Gwadar, which is the gateway of $1 million China-Pakistan economic corridor. So based on this, and of course the China-Pakistan economic corridor, please remember the three targets that were given. And for anyone who is not aware of this, please look at the CPEC long-term plan of 2017 and the documents of 2013, the first MOU that was signed, in which these three targets were articulated, from market cultivation to expansion to sustainable economic growth.
And this was not just for any particular region, it was the whole of Punjab, including Balochistan. So, therefore, when we talk of our deliverables, when we talk of even CPEC next phase, I think we should be very clear about these targets because these will be the stepping stone for moving towards CPEC next phase, and of course, they are extremely important. Similarly, there's some development happening regionally, and I think sitting in SDPI, all these researchers must be aware of the connectivity projects are happening. For example, Kazakhstan is has in the recent visit have announced that they are willing to invest 500 million in railway segment. So also highways, a lot of Chinese activities happening there in terms of identifying, looking at the risk. I am also here. SEO conference this year also spoke about inclusive development. So if you look at the map on left, you will see how the region is transforming from just a standalone CPEC project, but also into a regional connectivity platform in which, of course, Gwadar and Balochistan are very, very central key pillars of this linking the region. And therefore, we must, when we talk of Balochistan, we should also be aware not just Balochistan, but all in the entire western corridor of Pakistan and how that would be a linking platform with Central Asia because of Carrack 5 and Carrack 6, because Carrack 5 is connecting Karachi port and Carrack 6 is connecting Gwadar port via Basima Mustang to Tajikistan. So this is how the settings are in place. And if you look at the website of Carrick Institution, which is based in Urumqi, that's also very interesting because Carrick itself is a World Bank, Asian Development Bank supported program, and it is the research and the entire development is central around Xinjiang and the entire focus is to connect the region from Central Asia all the way to Gwadar. And also in this, we are looking at Pakistan Railway, which has acquired about 363 acre of land for container yard and of course additional 166 land of container yard will be completed to have an entire railway corridor that will connect. So this is how the shape of ML1, ML2, ML3, and ML4. Naturally, it is because in Pakistan we remain in haste and in quest that overnight things should happen. But these projects happen incrementally, phase by phase. And as the Chinese saying goes, it does not matter how fast you're moving as long as you're moving in the right direction. So this is the canvas that has been placed for ML1, which will essentially use the existing plate setup, just improving the infrastructure and digital connectivity of the entire ML1. But on ML2, if you look at ML2, ML3, and ML4, all of this is a connectivity platform connecting to Central Asia and beyond. And there's now a lot of discussion. Recently, an MOU, tripartite MOU was signed. What we are seeing, how China is now talking to both Afghanistan and Pakistan in terms of, and I'm in China, and there's a lot of discussion of how, and the first question that I got in my first interaction with the Chinese media was, how is Pakistan looking at Afghanistan through the prism of China? So I think that is extremely important. So with this infrastructure mindset, we all need to also understand that for development on land, sustainable growth along the coast is imperative. I think both the champions of development on land and infrastructure have to also do hand holding of champions of coastal development and make this in a more sequential manner because of the strategic location of Gwadar and also the and the coastline. In the Gwadar, in the CPEC long-term plan, there was an incentive called as 1+5, which included one as CPEC corridor, east, north, south, and then on the east-west, five coastal towns were identified
and I leave it to your researchers to look at that and look at how China had recommended, and I'll talk about that just in a few slides. So the ecosystem for integrity of Gwadar was being ensured when we talk of this, and the whole coastal tourism, which is one of the key pillars for economic growth of Balochistan, were identified. Similarly, we all know the potential of coastal tourism. We also know the potential of even IMF had identified that total maritime trade was USD 163 in 2023. During my visit to Urumqi, was also met with fish from Gwadar, which was quite interesting. There's a restaurant which is only serving fish and seafood products from Balochistan. So and our seafood export to China has risen by around 40% in past 10 years. So therefore, this is great opportunity for Balochistan, and I'm also setting a stage where we will talk about the challenges, but as long as we know the opportunities and what we are here for, I think that would be so. In Chinese advice in 2013, when we were setting up the stage for CPEC, was that they suggested that Pakistan must develop petrochemical, iron and steel, maritime, engineering, machinery, auto parts in southern areas. That included the entire coastline, setting up free trade zones along the coastline from Hub to Gwadar, and using that the way that ink spot development was done in China from Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Dalian, and then moving westward towards Beijing, and now towards the western part of China. It was in that entire scheme, Gwadar was positioned as the direct hinterland connecting Balochistan and Afghanistan. It was also suggested that Gwadar should be developed as a base for chemical industry, and also for industries like iron, steel, petrochemical, and develop tourism along the coastline. So just remember, this is Chinese telling us this, and we have, after 1 decade, again discussing what are the true potentials of Gwadar and talking about that. I will now quickly speak about the Gwadar projects and blue economy. By the way, for those of you who do not know, this five-star facility on the port was developed in 4.5 months by Chinese and Pakistani workers. And then, of course, the East Bay Expressway, which connects the coast with the coastal highway. Phase 2 of that will be in CPEC phase 2. So these are some of the projects, and if you look at the column on the rightmost column, you'll see a lot of grant, interest free, build, operate, transfer, and some of the projects done through PSDP. So what I mean to highlight is that it's not as much a burden as perhaps a narrative is being built around development of Gwadar and development of Balochistan, because if Gwadar develop, Balochistan develop, and I will speak about the complete plan, because I was in the committee for Gwadar master plan, and of course the entire spectrum for sectoral trend was made from short term to mid term and long term. And I'm flashing this because in SGPI, I think you should work on each sector, from fishery to heavy industry to light industry, trade and logistic and tourism. The entire plan was made so that incrementally, in short term, step by step, crossing the river by touching in stone, as Den Shopping would say. Uh, we develop and improve these clusters, because the potential is there. It's just about willingness, commitment, long term policy, and perhaps moving from where we are right now, from a fishery standalone industry to light and heavy industry, and improving to an industrial level from medium and high level value added in the industrial cluster development. So this sort of plan has to be again discussed
I know the cost of it is in billion of rupees, both in from Gwadar development, city development, and also the port development. And I will speak about that a little later. I think for Gwadar, we should develop the free trade zone into special economic zone and develop it into an enclave type SCZs, which can have and this narrative के Chinese आएंगे और यहाँ पर कब्जा कर लेंगे. I think Chinese in 5,000 years have not done that, and they have no interest in doing it in Gwadar. I think they all, yes, they are interested in development Gwadar, because they are also interested in development of Pakistan. And I think for Pakistan to be an industrial hub, this is the Gwadar master plan as it is now, and it clearly looks at the ecological development from old city to of course the free trade zone, the which was supposed to be developed by through PSGP, and then of course different type of industry. So if you look at this map and compare it with the the short and mid-term and long-term plan, you will exactly know how Gawada development is being said. But sometimes, such details are minced in political discussion. And this is the Gawada Free Trade Zone. It is not uh, taken off as much as it should, but the problem is electricity as we speak, and also the other utilities. So this is a normal problem in Pakistan. Whether you talk in Russia, whether you talk in Gawada, like utilities. और अगर आप गवर्नमेंट से बातें करें तो वो इतने बड़े रेट्रिक्स आते हैं कि sometimes I say, and I although sitting in China it's difficult to say this, but मैं जो जॉर्ज सलीम साहब से परमिशन लेते हुए ये जरूर कहूंगा कि हम हायर देन माउंटेन, पर देन ओशन से निकल के अगर जमीन पे आ जाए ना सिर्फ, तो आई थिंक बहुत सारी चीजें जो हैं वो हो जाएंगी, क्योंकि डीप समुंदर में जाने की अभी कैपेसिटी नहीं है और माउंटेन्स में चढ़ने की हिम्मत नहीं है. सो जमीन पे रहते हुए हम अगर डेवलपमेंट की बात करें और सिंपल सिंपल जो मॉडल्स हमारे पास राइट लेफ्ट एंड सेंटर हैं, मुल्क तरक्की कर रहे हैं, हम उसको अगर फॉलो कर लें. गवादर फ्री जोन के अंदर क्लियर पूरा एक सिस्टम और सक्सेस फैक्टर आइडेंटिफाई किए गए थे कि कैसे ये कार्गो को देखेगा और ब्लाइट. लेकिन आपको मैं बताऊं कि इवन आफ्टर ऑलमोस्ट अ डेकेड, अब भी अगर जब वहां पर एक शिप आ जाता है, यू नो वन ट्रांजिट ट्रेड का, तो ट्रक्स की शॉर्टेज पड़ जाती है. दे हैव टू बी यू नो ब्रॉट फ्रॉम पंजाब एंड सिंध. सो आई थिंक जब हम बात करते हैं लॉजिस्टिक सेटअप की, जब हम बात करते हैं तो आई थिंक कि हमें वेयर हाउस मेंटेलिटी के से निकल के ओवरऑल एक लॉजिस्टिक सेटअप की तरफ जाना है, जो कि गवादर का पोटेंशियल है. डिस्पाइट द इशू ऑफ सिक्योरिटी, आई नो इशू ऑफ सिक्योरिटी इज देयर, और उसको हैंडल करने के लिए आई थिंक कॉबॉय स्टाइल सिक्योरिटी से निकल के हमें मोर ऑफ टेक्नोलॉजी लेड सिक्योरिटी, जैसे दुनिया के तमाम ममालिक कर रहे हैं, उस तरह करना होगा. और उसी से ही आपके गवादर के, एंड आई थिंक वी नीड टू टॉक मोर टू द टेक होल्डर्स. तो इसीलिए गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए क्या इश्यूज हैं? आई थिंक लेस नंबर ऑफ शिप कॉल है, कनेक्टिविटी का अभी भी इशू है, पावर. अब आप खुद सोचें कि 70 साल तक हम 10 मेगावाट देते रहे पूरे लसबेला डिस्ट्रिक्ट को. आई थिंक नाउ the government has taken few good steps like 100 megawatt from Iran and 300 megawatt which is coming through CPEC. अब ये डिबेट से निकल जाए कोल पावर और गैस पावर या रिन्यूएबल. फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्रोवाइड करें ताकि एनर्जी की डेवलपमेंट की तरफ जा सके. वाटर डेफिशिएंसी गवादर की अभी जो वाटर की रिक्वायरमेंट अबाउट 6 million gallons पर डे है. राइट नाउ वी हैव अराउंड 2.3 2.6, जिसमें से वो पोर्ट पे लगा हुआ डीसेल प्लांट इंक्लूडेड है. सो बाय 2050 दिस विल बी अराउंड 7 million gallons पर डे. तो हमें इमीडिएटली इस पे काम करने की ज़रूरत है. हमने कुछ डैम्स बना लिए हैं अलोंग दी कॉरिडोर, लेकिन उनको कनेक्ट करना है, जो वाटर रिजर्वायर बनाए शादी कोर में, कावड़ा डैम में, और उनको कनेक्ट करना है विद दी सिस्टम. एंड देन ऑफ कोर्स दी सिक्योरिटी, जो कि ओवरऑल सेफ सिटी की हम बड़े अरसे से बात कर रहे हैं, वो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो सका, because that has to be done by the provincial government. Alhamdulillah, Gwadar Airport, thanks to Chinese government, has now is operational. Many people say कि ये कब ऑपरेशन हो, खाली पड़ा हुआ. I think it will happen. There is a plan.
और याद रखिएगा कि अगर पब्लिक मनी अगर पाकिस्तान के अंदर ज़ाया हो सकता है, तो चाइनीज ऐसे पब्लिक मनी को ज़ाया नहीं करते कि एयरपोर्ट बना दिया और आपके हवाले करके छोड़। देर इज़ अ प्लान, और जैसा मैंने आपको सारा बताया उसके मुताबिक चलना है, लेकिन काम पाकिस्तान ने ही करना होगा, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ही करना होगा, और पाकिस्तान के लोगों ने करना होगा। इसके लिए हमें लोगों का, मैंने इसलिए कहा है कि ये फॉर दिस ऑल टू मटीरियलाइज वी नीड टू हैव द कैपेसिटी एंड वी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ। तो मेरे ये गुजारिश यहाँ पे ये होगी कि यूनिवर्सिटीज़ अब हमें शायद थोड़ी कम कर देनी बनानी चाहिए, और हमें वोकेशनल सेंटर्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर ग्रेजुएट्स तो बहुत मिलते हैं, प्लम्बर चंद ही मिलते हैं। एंड दैट ट्रू अगर आप बलूचिस्तान का सोच लें किस तरह। सो आई नीड वी नीड मोर स्किल्ड लेबर, जिसकी बहुत शदीद कमी महसूस की जा रही है ओवरऑल सी पैक के, बिकॉज आई एम एसोसिएटेड टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स, आई एम एसोसिएटेड टू अदर्स। देयर इज अ ह्यूज गैप एज फार एज, और उसको भी अगर हमने गैप चाइनीज से फिल कराना है तो फिर वो सही नहीं है। आई थिंक हमारे जो टेफ्टा और नेफ्टैक हैं वो अब वन साइज फिट ऑल सिचुएशन से निकल के टेलर मेड, बलूचिस्तान में क्या रिक्वायरमेंट है उनके लिए अलग करें, केपी में क्या रिक्वायरमेंट है उनके लिए अलग ट्रेनिंग करें। इस पे एक्सप्रेस वे इज फंक्शनल 10 किलोमीटर। इसका फेज 2 सीपैक फेज 2 का हिस्सा होगा, जिसमें रेल का भी कनेक्टिविटी उसके अंदर आ जाएगी, और ये कोस्टल हाईवे N20 के साथ इसको लिंक किया जा रहा है, विच इज़ अ ग्रेट प्रोजेक्ट। वोकेशनल सेंटर के अंदर ये एरियाज हैं चाइनीज ने प्रपोज किए हुए फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। द सेंटर इज ब्यूटीफुल, अगर आप में से किसी का आई थिंक वी नीड मोर human resource to run that. That human resource was promised by Pakistan, so I think that is one step we should take. It's a low hanging initiative, और इसके लिए हमें अपना टाइम मजीद ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट हो चुका है इसका, बट आई थिंक इन फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग स्कूल इसका पार्ट है, वो बहुत अच्छी तरह उसकी प्लानिंग करके हमें इसको लेके जाना चाहिए। एंड आई थिंक अंडर द सिट का प्लेटफॉर्म, विच इज़ यूएसएआईडी इक्विवेलेंट, चाइनीज यूएसएआईडी इक्विवेलेंट, उस पर काफ़ी promise है for Pakistan to actually undertake this project. This project was also taken by सिटका, even the गवादर एयरपोर्ट जहाँ पे ग्रांट प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये भी ग्रांट है। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आगे जाए। As I said, we have 1.2 million gallons per day का आरओ प्लांट, लेकिन हमें अभी 5 मिलियन गैलन्स का चाइनीज के सिटका के थ्रू लाना पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट अगले 10 साल की प्रोजेक्ट। इसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, इस पर काफ़ी डिस्कशन हुई है, CDW और एक्निक ने भी इसको अप्रूव कर दिया है, लेकिन अभी इसका फिजिकल वर्क शुरू नहीं हुआ। ये 1.2 का है और इसी लाइंस पे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि दुनिया में अगर कोई डी सेल प्लांट चला सकते हैं ग्लोबली तो वो चाइनीज ही हैं। हमने बड़े एक्सपेरिमेंट किए, DHA कराची है, अदरवाइज और BFW भी एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे ग्वादर में। आई थिंक द कैपेसिटी इज ओनली विद चाइनीज, एंड वी शुड लेट देम डू दिस प्रोजेक्ट इन व्हाटएवर वे। लास्टली मैं कुछ एक छोटा सा शॉर्ट एनालिसिस कर लेता हूँ कि वी हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ्स इंक्लूडिंग आवर फेवरेबल geographical location, good deep sea water port conditions, sufficient supply of undeveloped land resources. We have the opportunity of CPEC phase 2, but coming to the weakness, I think हमारी जो capacity है urban development की वो बहुत ही weak है, provincial government की भी बहुत weak है, utility हमारे पास इन शदीद कमी है, बिजली और गैस, मतलब आजकल तो ये ह्यूमन राइट्स का है, बिजली गैस इंटरनेट रोटी कपड़ा मकान के साथ। सो आई थिंक अब इस पर मजीद हमें एम्बेरस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो खुद शर्म आती है अगर किसी कैबिनेट कमेटी में या चाइनीज की डिस्कशन के अंदर वो ये हाईलाइट करें कि जी ऐसी जो फ्री ट्रेड जोन्स को बिजली और गैस नहीं मिल रही। तो आई थिंक दैट्स एन एम्बेरसिंग थिंग, और इसको समझना ऐसे ही चाहिए। टाइम हैज कम कि हम इसी तरह बात करें। We there is a lot of underdeveloped infrastructure, and lastly, of course, we have the tense security situation, in which I said technology is in the solution. Otherwise, there is no solution. And of course, talking to stakeholders, getting them involved in the development scheme of Gawada. And lastly, when it comes to port development versus city development, I think we need to synchronize provincial and federal government development mechanism and plans, because maritime ministry जो है they keep speaking about the port development plan, and of course the Balochistan government speaks about the city development master plan जो 2017 में बनाया गया।
आई थिंक उसके अंदर दोनों में जो लो हैंगिंग है उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाए और कलेक्टिव एफर्ट के साथ दोनों प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट इसको आगे लेके चलें, और जब एक स्टेज आए कि पोर्ट की डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस है तो उसकी तरफ हो जाए, और साथ साथ सिटी को डेवलप करते जाएं, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्लान है पाकिस्तान की नेक्स्ट 100 ईयर्स की को डिफाइन कर रहा है ये प्लान। सो आई थिंक इसके अंदर मोर एनर्जी, मोर एफर्ट, मोर डिस्कशन लाइक व्हाट वी आर हैविंग करने की जरूरत। सो व्हाट आई जस्ट वांट टू हाईलाइट कि यस बलोचिस्तान के इश्यूज हैं, हम पॉलिटिकल इश्यूज की भी बात करते हैं जो कि हमने खुद हल करने, लेकिन जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं और जो कैनवस है वो सेट है थ्रू सीपैक। सीपैक फेज 2 में इसको मजीद इम्प्रूव किया है। ऑल वी नीड इज टू वर्क ऑन आवर वीकनेस एंड चैलेंजेस, और इसके लिए हमें the federal government, the provincial government, and of course, with the support of Chinese government, we can get this done in next 10 years. The way forward is very clear, and I think uh, let's give Balochistan what it deserves and the promises that have been made. Thank you very much. Inshallah. Thank you so much, Dr. Hassan, for again providing such wonderful information, such useful information. Fully agreeing. Definitely, what we need is the more uh, work rather than again just going towards more and more policy institutions. So thank you so much, Dr. Hassan, and fully agree. I think Dr. Hassan, हमारा भी एक मकसद इस dialogue का भी है, because SDPI a bit almost like 4 to 6 months ago we sort of started this work on जहाँ हम लोगों ने थोड़ा market potential scope करना शुरू किया of Balochistan already. Thank you so much for showing us all the information that does exist. Trend is let's hopefully sort of try to increase the trend, but उससे related I think one of the key areas was to just कि हम एक market study भी उसके ऊपर करना चाह रहे थे, just to sort of showcase the investors आपने भी जहाँ पे बात की what the potential exists, where exactly the potential exists, where can these investors sort of coming to. With this we'll be going towards a panel discussion, and firstly I'll let के हमारी जो initial एक study है uska just to sort of show what that study is, what it's going to sort of iske hamare outcomes kya honge. It's again definitely a work in progress. But for this, I'll be inviting Engineer Ahad Nazir. Ahad Saab is currently working in as Associate Research Fellow at SDPI, and also heads Center for Private Sector Engagement, Center for Learning and Development as well. So with this, Ahad Saab, it's over to you. Thank you. थैंक यू बैद। बड़ा मुश्किल होता है डॉक्टर हसान के बाद बोलना, क्योंकि वो काफ़ी आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने कवर कर लिया, लेकिन मैं थोड़ा सा एक दूसरे एस्पेक्ट से बलूचिस्तान की डेवलपमेंट को टच कर रहा हूँगा, विच इज़ फ्रॉम द बिजनेस रेगुलेटरी इन्वायरमेंट साइड। एक स्टार्ट पे जस्ट एनेक्डोटली एक फिलोसफिकल पॉइंट से मैं स्टार्ट करूँगा, विच इज़ रिफॉर्म्स वर्सेस रेवोल्यूशन। नॉर्मली हमारा जो एटीट्यूड है कि हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बाहर से आएगा और वो आके सब कुछ चेंज कर देगा, रेवोल्यूशन माइंडसेट जिसको कहते हैं। जिस तरह सीपैक भी जब स्टार्ट हुआ तो किसी ने उसे गेम ओवर कह दिया, किसी ने गेम चेंजर कह दिया, लेकिन किसी ने ये बात नहीं की कि इस इनिशिएटिव को कामयाब करने के लिए हमें अपने अंदर क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, अपनी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या क्या चीज़ें बेहतर करनी पड़ेंगी। उस टाइम पे एक डिबेट ये भी चली कि शायद सीपैक इज़ द न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस पर भी मेरा जो हम्बल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब भी हमारा ही कसूर था कि हमारे रिफॉर्म मैकेनिज़्म कोई नहीं था, और हमने उन्हें खुद इनवाइट किया कि आके हम पे जितने भी साल उन्होंने हुक्मरानी की वो करके जाएं। इसके साथ ही पब्लिक पॉलिसी के कुछ हमारे बेसिक इश्यूज हैं जो कि हर जगह नज़र आते हैं, और मैं उसी के अंदर स्पेसिफिकली बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो बता रहा हूँ। और वो आपकी पहली चीज़ पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी है, दूसरी पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स है। पांच पांच डिपार्टमेंट्स हमारे एक ही काम पे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो काम हो नहीं पा रहा। तो उसी के हवाले से थोड़ा सा ये एक हमने स्टडी कंडक्ट की, और ये स्टडी स्टार्ट हुई थी 2016 में, लेकिन उस टाइम पे हम पब्लिश नहीं कर सके, फिर उसी को हमने डाटा को रिन्यू करके तो अब हम इसे पब्लिश कर रहे होंगे। अच्छा जी,
अभी अगर हम देखें तो अभी करंटली स्टडी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, अगर हम बलूचिस्तान को देखें, आई थिंक डॉक्टर हसान ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया रीजनल कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बलूचिस्तान की इम्पोर्टेंस, प्लस जो हमारा मेन इशू है कि हमारा जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अब तक चलता रहा है, उस पे ऑल्दो इसमें मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट की मुख्तलिफ राय हो सकती है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर ये है कि वो अननेचुरल टाइप ऑफ ग्रोथ है या डेवलपमेंट है, जिसके अंदर हमने प्राइमरी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस छोड़ के हम कभी सेकेंडरी पे चले जाते हैं और कभी टर्शरी। यानी प्राइमरी का मतलब है आपके जो ये माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, फिशरीज हैं, लाइव स्टॉक है, इन चीज़ों ये हम कहते हैं कि जी हमारी बैकबोन है। लेकिन इसको हम छोड़ के कभी हम मैन्युफैक्चरिंग के हक में बहुत ज़्यादा रेगुलेशन लेके आना शुरू कर देते हैं, और कभी हम सर्विसेज सेक्टर को। और मॉडल हमारा इस तरह का बन गया है कि पिछले 3 सालों से हमारे सर्विसेज की जो पोर्शन है जीडीपी में वो सबसे ज़्यादा आ रहा है, विच इज़ अननेचुरल इन द सेंस कि इसका मतलब है कि वो जो सर्विसेज हम दे रहे हैं दैट इज़ हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंट, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रियल बेस या हमारी प्राइमरी जो इंडस्ट्री की बेस उसके मुताबिक नहीं है। बलूचिस्तान हमारा ये मसला किसी हद तक हल कर सकता है, बिकॉज इट इज़ मिनरल रिच। इसके अंदर आपके पास फिशरीज का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसके अंदर आपके पास लाइफ स्टॉक का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसको उनको एक डेवलपमेंट प्लान चाहिए कि आपने अगर फिशरीज को डेवलप करना है तो उनकी सर्टिफिकेशन के लिए हमने क्या करना है, उसके अंदर जो है उनकी प्रोसेसिंग के लिए वहाँ पे क्या करना है। दूसरा जो इशू है वो बलूचिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो इश्यूज हैं। सो HDI इज़ वेरी लो फॉर मोस्ट ऑफ बलूचिस्तान। तो हमें मतलब ग्वादर माइट बिकम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद इन बलूचिस्तान, बट कीपिंग इन व्यू के कितना बड़ा एरिया है बलूचिस्तान का, हमें एक पूरी सूबे की वैल्यू चेन को भी साथ साथ देखना है। और दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लाना ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस या और भी इश्यूज हैं जिसकी वजह से मुश्किल रहा है, और उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। सो मेनली डेवलपमेंट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस होगी और कनेक्टिविटी। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो अल्टीमेटली वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। ये थोड़ी सी चीज़ें आई थिंक ये पहले डिस्कस की भी डॉक्टर हसान ने। मैंने सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ जो शेयर इन जीडीपी है, ये पाइट की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर एस्टिमेट हुआ है कि 7 to 8% जो पाकिस्तान का जीडीपी है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम बलूचिस्तान। इलेक्ट्रिफिकेशन का रेट भी हमारा बहुत कम है, 38% पे है। और जो सबसे अलार्मिंग चीज़ है विच ऑल्सो ट्रांसलेट्स इनटू प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, वो ऑन सोर्स रेवेन्यू है विच इज़ लेस देन 7%। अब CPEC 1 के अंदर हमने ऑलरेडी देख लिया कि बहुत सारे आपके फाउंडेशनल एसेट्स बन गए हैं विच कैन हेल्प, जिसके अंदर मेन फोकस ऑफ कोर्स ग्वादर पे है, लेकिन आपकी M8 है, N85 है, जिनका एक तरह से जो कनेक्टिविटी का इशू था इनसाइड बलूचिस्तान, और जिस तरह डॉक्टर हसान ने डिस्कस किया कि इसके साथ ही कैरिक और बाकी जब कॉरिडोर्स मिलेंगे तो हमारी दिस कैन ऑल्सो ट्रांसलेट इनटू रीजनल कनेक्टिविटी। अब CPEC 2 जो है, अब हम एक तरह से हम फोकस कर रहे हैं फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो हमें इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, जो बिजनेस रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है उसको बेहतर करना है। इसके अंदर रेगुलेटरी कोहेरेंस, वही मैंने जो बात की कि कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना है। इसके अंदर फेडरल प्रोविंशियल भी और प्रोविंस के अंदर भी, इसी तरह फेडरल के अंदर भी मल्टीपल एजेंसीज हैं विच आर डूइंग द सेम थिंग। हमारे अभी तक डबल टैक्सेशन का इशू हम सॉल्व नहीं कर सके, नॉट मतलब फेडरल में ही सॉल्व नहीं कर सके, तो आप सोचेंगे प्रोविंसेस में क्या हाल होगा। फिर आपकी पब्लिक प्राइवेट पाइपलाइंस की बात, यानी बियॉन्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, आपको और मॉडल्स भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी एक स्टडी के लिए मैं आजकल उनको असेस कर रहा हूँ जो हमारे एक्ट्स बने हैं। ऑल्दो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी बलूचिस्तान में एक्टिव है, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मॉडल ये है कि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पैसे लगाएगी, प्राइवेट सेक्टर थोड़े पैसे लगाएगा और काम प्राइवेट सेक्टर करेगा।
बट इसके अंदर और मॉडल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट के एसेट्स जो हैं दे कैन बिकम फाइनेंशियली सस्टेनेबल। और अगेन जो लास्ट आपका थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू है विच इज़ द लोकल बाय इन, वो भी हमें देखने की ज़रूरत है। अगर मैं 5 स्ट्रेटेजिक लीवर्स की बात करूं जो कि एक्शंस हमें लेने की ज़रूरत है इन दी कमिंग फ्यू इयर्स, जिससे जो CPEC 2.0 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सकते हैं। नंबर 1 इज़ द एक सेपरेट बलूचिस्तान रेलेवेंट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन यूनिट होना चाहिए, मे बी अंडर द एम्बिट ऑफ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और SIFC, या इसको एक सेपरेट डोमेन हमें रखना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ अ सेपरेट लैंड। इसके इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा शायद एक्स्ट्रा फैसिलिटेशन देनी पड़े। पंजाब की इन्वेस्टमेंट, सिंध की इन्वेस्टमेंट, खैबर पख्तूनख्वा की इन्वेस्टमेंट और बलूचिस्तान की इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस होगा। सेकेंड, आई थिंक एक डिटेल्ड स्टडी हमें चाहिए विद रिगार्ड्स टू द सेक्टर क्लस्टर्स जो अवेलेबल हैं, जिस तरह एग्री है, फिशरीज हैं, मिनरल्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि विंड एनर्जी का पोटेंशियल है, इस पे कोई आपको प्रॉपर एविडेंस नहीं है। ये सारा कुछ एनेक्डोट्स की बेस पे हम कहते हैं। एक दो पेपर्स हैं जो बलूचिस्तान UET के लोगों ने लिखे हैं, बट अगेन दीज आर नॉट नेशनल लेवल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये बता सके। जैसे सिंध में कॉरिडोर बनने से पहले एक 50,000 मेगावाट का एक हमारे पास स्टडी आई थी पूरी, और वो स्टडी AEDB ने की थी और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई। थर्ड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर रेल, ग्रिड, वाटर एंड ऑफ कोर्स द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो बन रहे हैं। अगर हम लोगों की बात करें तो वहाँ पे लोकल लेबर और SME की इंक्लूजन इन द ओवरऑल वैल्यू चेन ऑफ नॉट ओनली दिस इनिशिएटिव बट अदर्स एज वेल। और इससे ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल इश्यूज भी शायद कुछ हल हो जाएं। जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एक माइंडसेट है कि जी चाइना आएगा और सब कुछ ले जाएगा, तो वो भी शायद यहाँ पे थोड़ा सा कवर हो सके। और लास्ट आपका जो है दैट इज़ मॉनिटरिंग। इसके अंदर ऑलरेडी SDPI ने एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इंडेक्स बनाया है, बट दैट इज़ एट अ फेडरल लेवल। वैसा ही एक इंडेक्स हम कंटेक्चुलाइज कर सकते हैं फॉर बलूचिस्तान, जो कि हर साल की जो इम्प्रूवमेंट्स आए उनको एक तो मॉनिटर कर रहा हो, प्लस इसके अंदर जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स हैं स्पेशली इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में, आई थिंक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कुछ अगर आई थिंक ये ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने भी कवर कर लिया। मसलन आपके पास रिकॉर्ड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपके पास जो फ्रूट्स हैं वहाँ पे उनकी कोल्ड चेन्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिर आपके सी फूड की प्रोसेसिंग एंड सर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपके पास सोलर का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल बलूचिस्तान में है। सो मिनी ग्रिड्स कैन रियली हेल्प। ये बहुत डिस्पर्स पॉपुलेशन के लिए जो आइडियल मॉडल है आपके पास। एंड देन यू हैव लॉजिस्टिक्स और मार्बल की बहुत ज़्यादा हब वाली साइट पे अवेलेबिलिटी है। इसके अंदर कुछ इंटरनेशनल केसेस भी हैं जो कि आई थिंक यूज़ किए जा सकते हैं जिस टाइम पे इसको हम डिज़ाइन कर रहे हो। मसलन आपका चिले में जो एटाकामा का इलाका है उसके अंदर वहाँ पे रॉयल्टी इन्वेस्टमेंट्स इन होस्ट डिस्ट्रिक्ट्स का एक मॉडल है। डिसेंट्रलाइज फिजिकल यूज़ जो मेन है कि आप किसी तरह वहाँ के लोकल लोगों को फिजिकली एम्पावर करें तो शायद वहाँ के ज़्यादा रेलेवेंट डिसीजंस हो सकें। अगर आप पूरे पाकिस्तान के लिए एक डिसीजन करते हैं तो गुजरांवाला डिवीज़न की टोटल सीट्स ज़्यादा हैं नेशनल असेंबली में देन द होल ऑफ बलूचिस्तान। सो आई थिंक ये भी हमें कवर करने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक पिलबारा जो एरिया है इसके अंदर इंडिजिनस बेनिफिट शेयरिंग का एक मॉडल है जो आई थिंक देखा जा सकता है, जिसके अंदर ट्राइपार्टाइट सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। देन ज़ैम्बिया, वहाँ पे आपके पास पॉलिसी कंसिस्टेंसी के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है जिस पे देखा जा सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान में एक ये इशू है कि आपकी बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज़ बन के फिर रिवर्स हुई हैं। इसी तरह एग्री बिजनेसेस और SEZs को अगर हम स्पेसिफिक एक केस स्टडी के तौर पे देखें तो आपके मोरक्को के जो कोल्ड चेन के मॉडल्स हैं कोऑपरेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक वो देखे जा सकते हैं बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। इथोपिया के आपके पास SEZs
जो मॉडल है उसको देखा जा सकता है, बिकॉज अगेन अगर सेम एसईजी रूल्स अप्लाई होंगे बलूचिस्तान के एसईजीज पे तो शायद वहाँ पे फिर भी इन्वेस्टमेंट लाने में मुश्किल हो देन अदर प्रोविंसेस। वियतनाम का एक ग्रीवेंस सेल बहुत एक आइडियल मॉडल है जिसको देखा जा सकता है। एंड देन इंडोनेशिया में आपके जो परमिट्स की हार्मोनाइजेशन है थ्रू जीआईएस, दैट इज़ अगेन अ मॉडल जिसको देखा जा सकता है। और इसके अंदर जो मेन रिस्क और अगर मैं मिटिगेशन मेजर्स को देखूं तो उसके अंदर आपका सिक्योरिटी इज़ द मेन रिस्क। इसको आई थिंक देखा जा सकता है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात की उसी तरह का आई थिंक। बट दिस विल बी वेरी हार्ड टास्क, बहुत बड़ा एरिया है जिसको आपने कवर करना है। इंस्टीट्यूशनल इनर्शियाज हैं आपके, लेकिन अगर हम उसे फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग की बात करें, एक स्टडी है पाइट की विच स्टेट्स के आपकी जो बजट एफिशिएंसी है विच इज़ इट इज़ द लीस्ट इन बलूचिस्तान। सो आई थिंक वहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड बजट्स कैन रियली हेल्प। वाटर स्कैर्सिटी जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बात की, उसके अंदर डिसैलिनेशन एंड रिसाइकलिंग मैंडेट्स हैं। थोड़ा सा आई थिंक हम अगेन एक ही मॉडल को जब हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जब आप कराची और ग्वादर को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा है आपकी डिसैलिनेशन में। सो आई थिंक ये भी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। और प्लस अगेन जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म और वो पब्लिक स्कोर कार्ड अगर हमारे पास हो तो आई थिंक हर साल की इम्प्रूवमेंट उसके अंदर इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स नज़र आएंगी। रिफॉर्म्स का प्रोसेस हमेशा स्लो होता है, रेवोल्यूशन नॉर्मली जल्दी हो जाती है, बट उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हमेशा नेगेटिव ही आए हैं अभी तक जितनी रेवोल्यूशन हुई हैं। सो विद दिस ये एक सिर्फ सिंगल लाइनर में क्लोजिंग स्टेटमेंट एक देना चाहूँगा कि सीपेक built the roads, now we need to build the rules. With mineral wealth, local buy-in, and smarter investment policies, Balochistan can drive Pakistan's next wave of growth. Thank you very much. Thank you so much, Sab. So yes, this was exactly the idea to initially pitch कि हम लोगों की आप जो अपनी इंटरवेंशन चलें एंड दिस विल डेफिनेटली बी डेवलप फर्दर जैसे साथ साथ होती हैं, बल्कि इनफैक्ट वन ऑफ द आइडिया ऑफ हैविंग द डिस्कशन टुडे जैसे विद आई मीन जिस तरह हम लोग डिस्कशन में जाते हैं, विल बी रिक्वेस्टिंग द स्पीकर्स एज वेल एज एवरीवन प्रेजेंट हियर एज वेल एज ऑनलाइन कि वो अपनी इंटरवेंशंस इस फ्रेमवर्क स्टडी के ऊपर लाजमी दें and sort of let's move jointly from the policies towards the more actions. So thank you so much. I think with this we do have Johar Saab as well as Dr. Faiz, but sir, coming to I believe you first, thank you so much once again for joining us, sir. क्योंकि again IBRS works so much on this front, so अगर हम एक regional perspective से देखें, I mean, firstly, if you have any comments on what Dr. Hassan and Ahad Saab has also sort of mentioned, but अब exactly हमने बलूचिस्तान की जियो इकोनॉमिक पोजीशन जो है, how can we sort of leverage it to attract these sustainable investment flows, and again, how we can sort of deepen and in the integration within the CPEC और जो हमारे regional trade corridors वगैरह बन रहे हैं इनके साथ भी। So, sir, again, thank you so much for joining us with this. Over to you. Thank you. Thank you. I want it to be interactive. I'll just speak for a few minutes, and then, of course, it'd be more interesting if we could have then sort of Q&A and comments, and sort of the discussion flows from there. These journalists. Okay. Yeah, I'd start with this very interesting instance. A few months ago, I read an article which appeared in, of all the places, in Israel, actually Jerusalem Times. And it was written by some researcher at CSIS. As you know, CSIS is one of the most prominent think tanks in the US. When I was a research fellow at Georgetown University, I used to interact with them quite a bit. So that newspaper article actually advocated something which at the time seemed really out of place. It advocated that the US should again build closer relations with Pakistan. And why?
because of Balochistan. The article argued that Balochistan has one of the biggest reserves of critical minerals in the world, and its proximity to Afghanistan, which again has huge reserves of critical minerals. And we should recall that, China controls or dominates to the tune of 90% of the world trade of rare earths. In fact, that was one of the bargaining chips they had when they were dealing with the US recently on trade agreement. And very recently, we have read that finally there has been an agreement, a standby agreement of sorts, where China has agreed to continue selling, and they have export licenses for those to those Chinese, to the US companies. And these are very essential. Without those, you cannot build the computers, you cannot build it, even sort of some very high-tech products for aerospace industry and many, many other industries, the most sophisticated industries in the world. And so far as the critical minerals are concerned, again, China in the last 10, 15, 20 years, when they paid a special attention to Africa, one of the reasons were that Africa is blessed with those minerals. And China had been able to establish a very comprehensive supply chain. It seems to me that the US now realizes that they need to build a similar supply chain of those critical minerals. And that is why they're looking at all those regions which are blessed with those minerals. And that is where Balochistan came into discussion. And if you notice, ever since then, like this was, I would say 3, 4, 5 months ago. And ever since then, we have seen a trajectory of closer Pakistan-US relations, although there's not yet entirely focusing on the minerals, but minerals is definitely a segment where we have seen greater US interest. Now that is just one of the resources or natural resources that Balochistan has. I wouldn't really repeat what Dr. Hassan has said, and my dear friend here. But suffice to say that if we talk about Balochistan's strategic location, it's just 400 kilometers from Strait of Hormuz. And Strait of Hormuz, as we all know, is where 20 to 30% of world's energy trade and a significant portion of world's overall trade passes through. Then Gwadar in Balochistan, which is being developed for quite some time now as a port, it's a natural deep sea port. And in that way, it has a clear advantage over many other ports which are far, far bigger right now in the region. For instance, Dubai, Chabahar. Potentially, Gwadar could be the biggest port, in terms of it's being a natural deep sea port. And we have to remember that, like now when we look at Dubai, they have the biggest airport in the world in terms of traffic, international airport in the world. I think domestic is still Atlanta. And the amount of money they're earning just because of that airport and the Dubai port is just tremendous, if you compare especially to what we are earning in terms of our exports. But just 30, 40 years ago, perhaps 50 years ago, Dubai was just a fishing village. If you have visited the museum in Dubai, you can see what Dubai was. It's just like a small village in Pakistan. So the point is, unless these places transform, it's hard to see the true potential. In terms of becoming a transport hub, we always talk about
the CPEC vision of linking Western China with the Arabian Sea, which would save China, what, 2,500 kilometers? Because right now they have to go all the way through the South China Sea and then sort of a far greater distance. Similarly, for Central Asian countries, that could potentially halve the distance in terms of days. And the saving would be to the tune of about 30%. Now, that may seem marginal, but when you talk about potentially tens of billions of dollars worth of trade, then this starts becoming very important. It has been estimated that this route can save about $1,300 to $1,800 per container for all the trade. China, we have to remember, is the biggest trading nation on earth. It's bigger than the US in terms of trading. And it's bigger than the US, much far bigger than the US in terms of a manufacturing economy, in terms of its share in the global supply chain. Then again, if we talk about the strategic location of Balochistan next to Afghanistan, talk about Western China, but also the landlocked Central Asia. And on the other side, across the Arabian Sea to the Middle East, East Africa, and beyond. Potentially, if it's developed, and that's of course a big if, the gains for Pakistan in terms of the economic gains for Pakistan, just as a transport hub, could be about $24 billion by 2035, and potentially estimated to be $200 billion or more by 2050. Now, these figures are astounding compared to Pakistan's current exports and what we are currently earning from services exports in particular. In terms of, I mentioned the natural resources in terms of mining, but that's not all. In terms of agriculture, and the impression we have of Balochistan, a vast arid area comprising mostly desert, that's one thing. But I've seen myself the fruit orchards there many years ago when I visited Quetta. And some of the best fruit in Pakistan is produced there. 90% of country's grapes, cherries, and almonds, 60% of its peaches, pomegranates, and apricots, 70% of the dates, and so on. Now, there's a huge potential of enhancing this production. I was just the other day talking to the Greek and Italian ambassadors. We were talking about the olive cultivation in Pakistan. And they felt that parts of KP and Balochistan have the best climatic and sort of, land conditions or soil conditions for growth of olives. Then again, we don't think about that, but Balochistan has a significant portion of Pakistan's livestock production. It contributes about 52% of Pakistan's sheep, 41% of camels, and 22% of goats. Now, again, the potential for further expansion in that is tremendous. Blue economy potential, I don't really have to expand on that. 750 kilometers of coastline. For the time being, in terms of exports, it just contributes $8 million. But the potential is far, far greater, especially given the fact that in terms of mangroves alone, Balochistan has the 6th largest concentration of mangroves in the world. Then we have talked about the sustainable
or renewables. Again, the wind corridor, the solar corridor, probably the most potential in Pakistan. Now, all that is there. But now the question is what we have done about that so far. Again, an anecdote. I think it's about 20, I would say about 22, 23 years ago, that suddenly a lot of people in Pakistan wanted to buy real estate in Gawada. So once, my younger brother asked me, he said, oh, everybody's buying. Like my father used to be a real estate developer, so my brother was in the same line. He said a lot of his friends are buying real estate in Gawada. Does that have a good potential? I was then doing NIPA, and we had some experts who spoke about Balochistan. And one of them did not paint a very rosy picture. He had been there, and he said, I have visited Gawada. Now you have an airport, and we have a significant infrastructure there. He said, there's nothing there, and I don't really see it developing for the next 20 years. And that's what I told my brother. I said, okay, don't invest there for the time being. Hold on to that. And he took my advice and he benefited, because all the people who bought those files, so to speak, they lost a lot of money. So the point is, that was 20 some years ago. If you see in Dubai or other countries in 20 years, I mean, what to talk of 20 years, you go after 10 years to Dubai and you see literally the size doubling there. So much development taking place. And that's a small country. But in Pakistan, in 20 years, what we have so far built there, I mean, it's not really something to be proud of. And why is that? I believe that the biggest problem that we have is, we're very good at making plans and strategies and sort of, but our biggest weakness lies in implementation. Why is that? Bureaucracy. I've been part of bureaucracy as well myself. Luckily, I was on the diplomacy side, where you don't really have to build a lot of things. It's a little more intangible there. And perhaps, like generally what I've seen is the efficiency level is a little higher there as well, because you have to literally, when we are abroad, we have to compete with other countries or other bureaucracies of very developed countries. So it's a different playing field. But seriously, I mean, like even today, if you have to get a transfer done from CDA, I dare you, unless you really know somebody high up there, or you use other means, it will take you months or some very simple processes. That is the problem, I think. People have talked about sort of, the fact that in Balochistan, the money, I remember as a teenager, I used to read that Balochistan is being given huge sums of money in federal budget by Ziaul Haq, and ever since, all successive governments have done that. Where does that money go? I mean, the pilferage there is just enormous, that's a fact of life. I can tell you that in our bureaucracy, people used to get posted to Balochistan for 2 or 3 years so that they would make enough money then to come back and retire on that, I mean, I'm privy to things that I don't want to sort of, mention here. It's just, okay, it's in public view, so I can mention that. I was doing a staff course, and we had a bureaucrat from Balochistan there, I won't name him. He was a very meek guy, he'd never contributed to discussions, literally like, he was very kind of always very sort of, obedient and very sort of nice and everything. And definitely sort of, in terms of his sort of, intellectual contribution there was definitely subpar. But some months later, we read that his house had been sort of, I mean, basically, I don't know which agencies,
They had a raid on at his house, and billions of rupees was recovered in cash. This is one guy, and it's somebody that I knew. He was a disaster. I mean, it's just astounding. So basically, this inefficiency, the corruption that we face there, and I also believe that a lot of security problems that we have in there. In Afghanistan, when you had the security situation, I was in Germany once and we were in a seminar, and there was a German lieutenant general who had been posted there in Afghanistan. So when I asked him what is the biggest problem in Afghanistan, you know what he said to me? He said corruption. That is the key to the root to all the problems there, and that is why we have failed there, because there's so much corruption that all the money that is spent there is just siphoned off. You'll probably hear the tales of the presidents there, even in the last days, just transporting, all those cash in helicopters and planes. Balochistan, I think, in some ways faces a similar situation. Because of this massive inefficiency and corruption, not much gets done there. And because of that also, nothing trickles down to the masses. Generally, when money is spent in an economy, it's supposed to trickle down, that's what economics would tell you. But if all the money is being siphoned off or sent out of that province, then it won't happen. And then what will happen? There'll be no employment there. If there's no capital, the infrastructure quality would be abysmal. You won't have the you won't have any investments there because, nobody wants to invest in a place where there's such massive levels of inefficiency and corruption. And you cannot build a place these days in terms of, in terms of business potential, unless there's private sector participation. I mean, the government can only do so much. They can help build the infrastructure. They can help provide certain services. But beyond that, I mean, government cannot really put factories there. Government cannot really start all those mining operations. Government cannot really start those fishery operations. So it has to be private sector. And if the private sector has to be encouraged, both within Balochistan and outside Balochistan, both within Pakistan and outside Pakistan, then we have to really change that. Lastly, I think it was discussed at some length, some basic amenities which are still missing there. Electricity, for instance, desalination plants, water, similarly, I mean, even the road infrastructure, what is there, or the health infrastructure, or the education infrastructure. I'm not talking about Quetta. I'm talking about other parts of Balochistan. It's non-existent. We need to change that. So the path forward, if we have to mention that, then CPC. Okay, I have we've had so many seminars and conferences, and where Chinese have been always eminently and substantially present. CPEC needs to be reviewed in a way that the benefits of CPEC should reach the common man, and that is not happening yet. For instance, how many jobs has CPEC created so far? If you look at the numbers, they say about probably 150 or 200,000 or something. How many of those were local jobs? How many were basically worked by the Chinese? Now, I remember we used to talk to the Europeans many years ago, and when we used to encourage them to trade more with Pakistan, and we used to refer to this figure that $1 billion additional trade would create $1 million, create 1 million jobs in Pakistan. Why? Your per capita was $1,000 then, roughly. Okay, forget about 1 million.
let's say, 500,000, $250,000. Now, CPEC so far has spent $26 billion. How many jobs have been created? It should have created millions of jobs, you know. Somebody here mentioned about vocational training. I think that was a great idea. Skill enhancement is very, very important. I was ambassador to Germany for many years, and Germany has the best infrastructure in the world for vocational development. There, you know, the quality of sort of, you know, their craftsmen or the skilled people is just world class, probably the best in the world. And you know what the companies do there? All companies, whether they're private sector, and they are mostly private sector, in fact, perhaps more than 95%, they all have training centers and they train many more people than they need. For instance, Siemens. Now, Siemens has a training center which I visited. If they need 200 people every year from there, you know, these are people with vocational trainings, they will train 500, you know. So that is their service to the economy. That is their CSR. Who does that in Pakistan? The only technical training centers of some significance that were set up in Pakistan, there are a couple in Lahore that I visited once, perhaps a few others, you know. There's literally non-existence again. We were just producing those people with FAs or BAs. You know, what are they going to do? How can they contribute to the economy? So that needs to be changed. Lastly, CPEC has to focus on technology transfer. Because if that doesn't happen, then the net benefit is not that amazing, in my view. How do you do that? I mean, there are different ways. One is, relocation of industries. By the way, was a vision, but how many industries have actually relocated to Pakistan so far as China moves up the trajectory? They have been moving. We know that they have been moving industries to Cambodia. They've been moving to Laos. They've been moving to Vietnam. But how many to Pakistan? It has not happened, you know. That needs to be changed. Again, when we talk to the Chinese, they say we want to do that. But they complain about what? They complain again about the inefficiencies here, particularly the bureaucratic inefficiencies. We talked about SEZs. I was told once by a Chinese entrepreneur. He said that for one SEZ, just the notification, the issuance of notification, which would have not taken more than a month perhaps, or even less, took 8 years. You know, so these are the type of bottlenecks that we need to really do something about. So I'll just stop here. Perfect. Thank you so much, Sujoha. I think before we go to Dr. Faiz, if he has any questions from here, particularly for the remarks which Sujoha has given, we do have time to just take a couple before we go to Dr. Faiz and Dr. Kuratalen and Mr. Han. Even if you have any questions, yes, G, please. We can take a couple. Even if you have any questions from Ahad Saab or Dr. Hassan as well, please to ask them. And then we'll go to Dr. Faiz and Rehana. Okay, thank you so much. I think what we have learned, you talked about the internal factors that Balochistan is, affecting. So there are certain, external factors that we are facing right now, like when we're talking about the climate policy tools like CBAM. And in that context, how do you see that and all that what would be the right approach for the industries, especially based in Balochistan, for the minerals or cement, that how they could be pitched in that way, keeping in view that we do have geopolitical scenarios, and how China can support in that perspective as well. Yeah, thank you. Yes, thank you. Ji, Tahir sir, please. Yes, we can take 3 questions and then we'll come to the presence. Salim sir, thank you very much for your time and all that. I was just wondering, had Israel succeeded in regime change in Iran, US and Israel would have been sitting at Chabahar and Bandar Abbas. It would have become impossible for Gwadar to operate in that atmosphere. And I still remember that, what was her name?
US Undersecretary, came here and openly she said that we can support only if you stop the CPEC. When we go around and meet people, decision makers, I mean, so many people want to join US still, like the Modi want to join the North, not the southern nations and all that. So this internal dichotomy that a part of us advocates CPEC and all that, China looking forward to give passage to China, and a big part of us still was specially groomed in the heydays of West and all. They still want to have their children there. They studied there, live in the Western parts of the world. They post-retirement, they go back to have sun and all on the beach, and they want to settle over there. They advocate Gawad, I mean, joining the US at all cost. This is the only cause that is stopping Gawad. All other things are secondary. I mean, this is the primary reason. Do you think that now, after these two fiascos, Pakistan and India and China, Iran and Israel, now there is some determination or clear policy shift in Pakistan that yes, the establishment, especially their establishment with a stick and all that, is ready to face the pressure and I mean, let the Gawad build under their umbrella. Yes, because that is the reason. Ji, So just very quickly, Ali bhai, very briefly, and we'll go to Sir. Excellency, thank you so much for your insightful lecture. So my quick question is that when we have a pandemic, we see a very unprecedented kind of administrative model that is led by our bureaucracy and our military leadership that performs very well, and we champion our fight against pandemic. But when it comes to strategic projects like CPEC and development in the areas like Balochistan, we never see that kind of commitment. Is it the system that resists it, or is it the decision makers who are slacking to take or are hesitant to take such kind of bold steps? We raise special security divisions to guard CPEC. We have special consortiums and many other initiatives to champion and poster this project as our game changer. But when it comes to the real thing, and that is to improve those inefficiencies that you mentioned, why we see we don't find that kind of commitment, sir. Thank you. Thank you so much, Ali. So, sir, just to sort of summarize, I believe 3 questions. Firstly, it is what is the impact of the external factors, such as any of the export compliance mechanisms, such as CBAM, that can have on the scenario. The second one is the geopolitical tensions, especially the one Tahir Saab talked about. And lastly, why do we have different administrative models, perhaps if we do? And what are some of these success factors for them as well, just like Ali mentioned? Yes. Okay. So question I would leave for my fellow panelists. Question 2 and 3 I could address. Okay, it's very interesting. You mentioned about the US rule. Okay, I personally think that regime change was not an objective now, presently. It was like, it's a long-term objective, but in the short term, they just wanted to weaken the regime there. That's what I think. And there were 2 other objectives which have been partially met, but the strategic objective has not been met. But coming to the crux of your question, Tahir Saab, I personally don't think there's a contradiction here. In Pakistan, what we see is a resolve. Okay, the US is our biggest trading partner in terms of exports. China is our biggest trading partner in terms of imports. We earn our biggest trading surplus from the US. With China, of course, we don't really have a surplus, we have a deficit. But in terms of investment, we don't really get anything from the US. On the other hand, with China, we have this huge partnership now, CPEC. On CPEC, I think there is a clear consensus in Pakistan.
So it's probably, in my view, it has not really a lot to do with our policy for the US. I mean, of course, it's not easy for us to find a balance, in a world where China is the revisionist power and the US is the status quoist power. And we see a Thucydides trap, in process. And this region becoming one of the theaters for that will create a lot of complications for us. But that's a different topic. Coming back to this, it won't be easy for us to deal with that situation. But for CPEC, we are clear. No other country was investing in Pakistan. And yes, the West has a lot of misgivings against the CPEC. When I was ambassador to Germany or Italy, I mean, the ministers there would, in the meetings, sometimes they would start talking about CPEC for 10, 15, 20 minutes. And literally, kind of trying to demonstrate to us that how it's a disaster for you, and then we would address that and and we've had a lot of seminars and conferences there trying to project our viewpoint there, which was very different to theirs. And my simple question always used to be to them, I said, look, we were looking for investments, right? We would have preferred those coming from you because, we have a history of 60, 70 years of German investments and US investments. And in Pakistan, the markets are very familiar with your products and your brands and everything. And the reputation of your products is far, far better than the reputation of Chinese products. But you were not there. You were not interested in investing in Pakistan. That's where the Chinese came in. So if you are still interested, all the opportunities are there. But the fact is, CPEC has not suffered, in my view, from a lack of political will. Political will has been there. There's no government which has challenged that. Successively government has if you look at the rhetoric from the government or the resolve, or even the policies, I don't find a problem there. The problem is with the implementation, And the other challenge that I see is with the fact that, look, some of the projections may not have been very, accurate. For instance, when it was decided to spend billions of dollars on producing energy, all those IPPs, which were part of CPEC. Now, nobody was able to project accurately our energy needs. So what happened subsequently? We did not need all that energy that they're producing. And now we have to pay capacity payments, right? So that was, it was a technical problem. It was a projection problem. Again, something to do with the bureaucracy or our experts, but not with the a question of political will. Similarly, the other things, for instance, if they are not able to, out of the 9 planned SEZs, if only 2 are functional, and those have been, quite frankly, but amongst us, some of them have been inaugurated again and again and again, the same SEZs, and nothing much has happened beyond that in all these years. Now probably it's gathering some pace. It's a failure. When the Chinese talk to us, they never complain about political will or or the fact that Americans are trying to destabilize it. You know what they complain about? They say that things don't get done here. That is their biggest complaint, And recently, Chinese used a very interesting term for that, which I've forgotten. Otherwise, I would have shared. But I think that is the problem. Yes. Now, coming to the second question. Okay, pandemic response. Why it was so good. Okay, I think what happens is, for emergencies, like when we had the flood situation as well, then the military gets involved. And, military civilian that partnership is very well suited to emergencies and those type of situations, But on the other hand, when you talk about long-term policy implementation, okay, we have created an SIFC, which is working fine, but that's just one institution. I mean, SIFC can only take care of very big projects, or certain, a narrow range of areas. But what about the rest of the country? There's nothing like that. And because there's no emergency,
This is not emergency. It's about business, you know. And like I said, we have to create the conditions for businessmen. Like, for instance, it's kind of, you know, like, it doesn't give me any pleasure to share with you, for instance, that I am hearing, and I have a lot of business friends, you know, like businessmen friends. I know now recently some of the big businessmen that we have in Pakistan who actually brought Chinese industries to Pakistan. They're now leaving the country. They're relocating to Saudi Arabia or some other countries. Why is that? When I ask them, what is the problem? Again, their frustration with the bureaucracy, their frustration with the tax sort of, you know, like apparatus, you know, sort of sometimes inconsistencies of policy and policy implementation. That is the problem. And for that, I do not think that, you see, so that is not a fair comparison in that way, because, you know, pandemic, at that time, the COVID pandemic required an emergency response. So, you know, you had a partnership, it was there for 6 months or a year, it worked well. But this is, you know, like, but building your economy is, you know, you can't do it on an sort of, you know, as an emergency project. You have to do it in a sustained manner. You know, it's like sustainable development. It has to be sort of, you know, kind of, it has to have its own traction, you know. You have to just kind of create the conditions. And my last point there, to create the conditions, what do you need to do? Okay, reform the bureaucracy. Then again, the contract enforcement is very important. You look at your courts, you know, if you take a simple matter to your courts, they can take generations literally, you know, like the way the courts work here. Again, sort of, you know, if there's no contract enforcement, if there are no property rights enforcement, if there are no intellectual rights enforcement, who would like to invest here? I mean, I've been in ambassador to Arab countries as well. I know, you know, they were interested. But again, you know, like in this type of an environment. And of course, the problem of security, the perceptions, the image problem, the country brand, we need to work on that. The security problem is real, you know, that has to be addressed too. And that is something where the government and of course, you know, our defense sort of, you know, apparatus, they can work hand in hand. Sure. So I'll stop Thank here. you. Thank you so much. So that was really insightful. We will come back to the questions a bit later as well. But firstly, I think just picking 2 points that does relate us to some of the discussion going forward. Just come, Sabina. Again, that is point around the communities, how, I mean, I think Mr. Saab has mentioned one very really point that CPEC 2.0 needs to be a lot community centric, a lot people centric development needs to happen. So I believe just touching upon 2 points, we're very pleased to again have with us Dr. Faiz Muhammad Kakar. He's the former Minister of Health and Environment, Government of Balochistan. And also, I will shortly be coming to Dr. Kuratalan, who's already known as one of the giving interventions that are really people centric. So I think you want to add something before we go to Dr. Faiz? Just 1 minute, perhaps. Ahad Saab wants to respond to point, and then we'll come directly to you. Just briefly, I think Saleha का जो question था CBM के हवाले से, so बलूचिस्तान का overall जो component है exports का वो बहुत कम है. So I think the main focus at the moment is infrastructure. कि हमारे पास पहले तो basic utilities हों जिससे इंडस्ट्री चले, मतलब शायद एक आध आपके हब वाली साइड पे तो फिर भी कुछ इंडस्ट्री है, लेकिन ओवरऑल वैसे आपके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है. और थर्ड पॉइंट पे मेरा सिर्फ एक का जो पॉइंट था, आई थिंक हम एडहॉक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, दे परफॉर्म वेरी वेल, और उसकी वजह से ही डुप्लीकेशन आती है. अब आपके पास डीएमए और सीडीए दोनों हैं जिनका मैंडेट सेम है. आज भी आई थिंक कोई कोर्ट ऑर्डर आया है कि सीडीए जो है वो अपनी अथॉरिटीज को दे. सो ये एडहॉक मेजर्स हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं. वो एडहॉक शॉर्ट पीरियड जैसे सड़ने का, उसके लिए तो वो अच्छा परफॉर्म कर जाती हैं, लेकिन ओवरऑल गवर्नेंस स्ट्रक्चर आपका वीक हो जाता है. थैंक यू सो मच साहब. सो जी डॉक्टर फाइज, नाउ कमिंग टू यू सर. अगेन since you have been looking at this portfolio previously, so जिस तरह बलोचिस्तान मुझे जरा इजाजत दे दीजिए. Just 1 minute, Dr. Hassan, just 1 minute. We can initially let Dr. Faiz for a brief. Sir, उसके हवाले से what safeguards and regulatory mechanisms do you think are essential to ensure that
जो भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, इट डज रिमेन अलाइन विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड जो प्रोविंस की अपनी एक इकोसिस्टम है आप उसके साथ. So, sir, any further if you want to add any interventions, and Dr. San, I will come to you direct right after. I just want to get myself excused because I have an Okay, official sure. commitment है. Well तो ये noted. बस इजाजत दीजिए. जी, Thank you so शुक्रिया. much. Ji, Dr. Faiz, please. Thank you. Thank you, the host and the rest of the participants, and especially the speakers, whose information and the knowledge about the CPEC was really brilliant and informative. But I don't know from where I to start. First is that about to respond to your query that what would be the safeguards about this protection and projection of the environmental sustainability. But before that, I just want something specially about to inform the participants. For example, our senior colleague said that what are the benefits of the CPEC till date to the common people. The first thing is that if we think that the CPEC is focused in the Balochistan, then the answer is nil. No benefit is there of CPEC till date to the common people of Balochistan. But if we consider the CPEC in the context of the loan, if we consider the interventions, the major interventions which have been constructed and completed in the rest of the Pakistan, apart from Balochistan, and then the answer of question is a bit different. For example, the majority of this 62 or $65 billion is supposed to be, but was supposed to be used for the energy sector and especially the infrastructure like the road, the motorways. So if we consider that the energy sector, so you can see that the NELM, JLM, and the rest of the mega projects of energy, so the benefits are there to the common people. And if we consider the motorways, the eastern route, so everybody know that there is a lot of benefit to the common people. But I don't know how many people are known that what is the length of motorway in Balochistan under the CPEC program. Does anybody know the length of motorway? Okay, let me tell कोई you. जवाब नहीं दे रहा. Please go ahead. जवाब दे भी नहीं सकते इसलिए कि इनको पता नहीं है. और यही हमारा अलमिया है, नेशनल अलमिया है कि बलूचिस्तान में मोटरवे 10 फुट भी नहीं है, बल्कि 1 फुट भी नहीं है. ठीक है, तो मकसद कहने का ये है कि वो एक साथी ने कहा कि भाई आपकी ये जो इश्यूज है ये पॉलिसी मेकर या डिसीजन मेकर्स का है या कुछ और है. मेरा ख्याल है इशू प्रायोरिटीज का है और डिसीजन मेकर्स का है. हमारे बलूचिस्तान में सिपैक के तहत जो अभी स्लाइड में दिखाए थे, जैसे ईस्टर्न बे के हवाले से बात हुई या एयरपोर्ट की बात हुई या हॉस्पिटल की बात हुई या वोकेशनल सेंटर जो अभी तक हम वो हुए, उसके अभी भी सिक्योरिटी सिचुएशन है कि इसमें कामन बंदा पहले से इजाज़त लिए बगैर इस जगह तक नहीं जा सकते. इवन एयरपोर्ट में जब तक आपको पहले इजाज़त नहीं हो तो आप एयरपोर्ट के हदूद में नहीं गुजर सकते. तो सबसे बड़ा इशू जो है वो तो सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी बलूचिस्तान में सिपैक में सबसे ज़्यादा जो है सफ़र कराने वाली चीज़ है. और जब तक हम इस गिवन सर्कमस्टांसिस में सिक्योरिटी को टैकल नहीं करेंगे तो सिपैक को आगे ले जाना बहुत एक ख्वाब ही है. लेकिन मैं थोड़ा सा इधर ये बात कहना चाहता हूँ कि इवन इन दिस सर्कमस्टांसिस स्टिल देयर इज ए वे. और वे क्या है कि इस सिक्योरिटी सिचुएशन में कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स आपके पास नहीं आएगा बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए. लेकिन
आप लोगों की इत्तला के लिए मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे चाइनीज फर्म्स अप टू $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी दरख्वास्तें दे रहे हैं। वो सिर्फ चाइनीज फर्म्स है और इनकी इतनी बड़ी डिमांड्स भी नहीं है। वो कहते हैं कि आप हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दे दे, जैसे वो चाइना में कहते हैं कि हमारे तमाम को जो काम थे वो एक कौंसल के जरिए हो रही थी। हम बलूचिस्तान में हमारे फेडरल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमत इस काबिल नहीं है कि वो यहाँ पे एक कौंसल बना के दे दे जो वन विंडो सर्विसेज उनको दे दे। वो हमारे तमाम सीज में इस वक्त आपके सीज में 16 सीज के तहत जो है वो सीपेक में अगर काम हो रहा है तो उसमें अगर सीज बलूचिस्तान में नहीं है तो बाकी सब में थोड़ा बहुत काम हो रहा है, सिर्फ बलूचिस्तान की सीज में काम नहीं हो रहे। जबकि हमारा इशू सबसे ज्यादा ये है कि बलूचिस्तान की सीज को फोकस करे और इस गिवन सिक्योरिटी सिचुएशन में सिर्फ सीज ई वायद उम्मीद की करन है कि इससे हम फायदा उठाए और बलूचिस्तान की गरीब लोगों को इसका बेनिफिट पहुंचे, चाहे वो अब चौकी में हो, चाहे वो ग्वादर में हो, चाहे वो चागी में हो, चाहे पशीन बोस्तान में हो। तो तभी गरीबों को, ये आम कामन लोगों को इसका बेनिफिट पहुंच सकते हैं, क्योंकि 44% पे 4% पॉपुलेशन, 44% पाकिस्तान पे पहले हुए 4% पॉपुलेशन को आप कभी भी, जो आपका सवाल था वो कि हमारे जो एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड किए जाए, ये एक ख्वाब है, ये पागलपन है। 12,000 सेटलमेंट जिसमें 2 घरों का भी एक सेटलमेंट है, ये 44% पाकिस्तान पे पहले हुए हैं। अगर आप वाशिंगटन का बजट भी लेकर आए तो इनको ना आप हॉस्पिटल दे सकते हैं, ना आप रोड दे सकते हैं, ना आप पानी दे सकते हैं, ना हॉस्पिटल दे सकते हैं, ना स्कूल दे सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस कि इसको अर्बनाइज ना किया जाए। और इसका अर्बनाइजेशन का बेहतरीन तरीका यही है कि हम सीज को प्रमोट करें। जैसे अभी हमारे जो स्पीकर थे उसने ये बताया कि यार शिंगाई यार शिंजन को आप देख ले, जो शिंजन था, शिंजन जो है वो अगर कोई गूगल करे तो वो वहां से बताया जाता है कि वो 30 लाख 40 लाख की एक जो है वो गाँव थी वहां पे चाइना में, और वो अब चार्टर्ड सिटी बन चुका है और वो अब 4 करोड़ की पॉपुलेशन उसमें तकरीबन उसका बन रहे। हमारे इतना ज्यादा डिमांड्स भी नहीं है। बलूचिस्तान की टोटल जो हमारे कोई 1,27,00,000 आबादी है, 1,27,00,000 में हमारे 62-68% तक रूरल एरिया है, बाकी ऑलरेडी अर्बन में जैसे कोयटा है, तुर्बत है, ग्वादर है। तो ये अगर आप देख ले तो ये 2 सीज में 3 सीज में ये सारे अर्बनाइज हो सकते हैं, लेकिन किसी को हमारे पॉलिसी लेवल पे थोड़ा सा इशू ये है, मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, मुझे इस पे कोई कंप्लेन नहीं है। जैसे मेरे साथ लिखा हुआ है डॉक्टर फैज काकड़ बलोच, हमारे साथियों को ये नहीं पता है कि काकड़ बलोच नहीं है, पठान है। तो ये हमारी दुनिया है, हमारे इंफॉर्मेशन है, ये मैं नहीं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ ये कि हमारे प्रायोरिटीज इस तरह है कि बलूचिस्तान को हमने अपना कभी सोचा नहीं है। अगर हम इसको अपना सोचे तो इतना आसान है कि हम खुद से इन्वेस्ट करने के बजाय इन चाइनीज को, जो $2 बिलियन के लोग हैं, पिछले 6 महीने से इसलिए ख्वार हो रहे कि भाई हमें सीज में काम करने के लिए कौंसल बना के दो, टैक्स हॉलीडे ऑलरेडी वहां पे है, वहां पे गैस बिजली पानी सारा सरकार ने प्रोवाइड किया हुआ है, वो विसिनिटी में काम करना चाहता है, वो बाउंड्री सारे बाउंड्री के अंदर एरिया है सीज का, चाहे बोस्तान का है चाहे लीडा का है, वो सारे। लेकिन इतना कोई बंदा नहीं कि ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में अभी तक कंफ्यूजन हो रहा है कि लीडा के जो सीज है वो फेडरल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर करना है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करना है। तो गवर्नमेंट इस पे मजबूर है कि वो पीपीपी के जरिए अपने ज्यादा पैसे डालकर प्राइवेट सेक्टर के लोगों को इनवाइट करते हैं। एक चीज ये है कि जैसे हेल्थ और उसके बारे में आपने कहा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, हम ये समझते हैं कि हमारा वायद हल यही है कि ये सीपेक में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो इससे हमारे लोग अर्बनाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे तमाम जो हेल्थ और एजुकेशन के इश्यूज है वो एड्रेस होंगे। तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये बेसिकली सेफगार्ड होगा हेल्थ एंड सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए, हेल्थ और एजुकेशन के लिए। सेकंड बात ये कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात है
मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे जो है, अगर आप देख ले क्लाइमेट चेंज की मेजर इम्पैक्ट आपको बलूचिस्तान में नजर आते हैं। ये एक केस स्टडी है। आप ड्राउट को देख ले, अभी भी चल रहे हैं। आपको फ्लड देखे तो 2022 में सेकंड अफेक्टेड प्रोविंस था। आप जो है कांगो वायरस की तरह जाए, हीट स्ट्रोक की तरह जाए, कोई भी आप चीज देख ले, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आपको बलूचिस्तान में नजर आएगा। और इस वजह सबसे बड़ी वजह अर्बनाइजेशन नहीं है, क्योंकि हमारे रूरल पॉपुलेशन को कोई अल्टरनेट लाइवलीहुड नहीं है, वो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है और नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लॉयड हो रहे हैं। और डिप्लीट इसलिए हो रहा है कि आपके वाटर टेबल वो गिर रहे, आपके जो है वेजिटेटिव कवर जो है वो ओवर ग्रेजिंग की वजह से कम हो रहे, डिफॉरेस्टेशन आपकी हो रही है, क्योंकि लोगों को फीलवुड चाहिए। रूरल एरियाज में आप ना गैस दे सकते हैं ना उनके साथ कोई और सोर्स है। तो मैं ये समझता हूं अगर सीपेक को थोड़ा सा फोकस किया जाए, इससे हमारे बलूचिस्तान के सिर्फ ये नहीं कि इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है वो कम्बैट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, वो रिजॉल्व होंगे, बल्कि हेल्थ और एजुकेशन के भी इश्यूज आएंगे सिर्फ और सिर्फ अर्बनाइजेशन से। अर्बनाइजेशन इज द ओनली वे जहाँ पे आप सिक्योरिटी भी इसको सही कर सकते हैं, जहाँ पे सब लोगों को आप उनके इश्यूज भी हल कर सकते हैं। अदरवाइज इस गिवन सर्कमस्टांसिस में इस रूरल एरिया में न ये सीपेक को छोड़ेगा फंक्शनल करने के लिए, ना हम सिक्योरिटी इश्यूज हल कर सकते हैं, ना अनएम्प्लॉयमेंट को हम कवर कर सकते हैं। ये सारे मसले ऐसे ही जो के तू रहेंगे। अगर कोई किसी क्वेश्चन हो तो मैं इसके लिए हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर फाइज एंड अपॉलॉजीज फॉर द एरर। आई थिंक वो उस चीज में आगे होगा, बट वेरी वेल नोटेड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच। जस्ट बिफोर गोइंग टू डॉक्टर कुरतुलैन, मिस Rehana, do you have any points that you want to add? Just very briefly, please, if there are any. No, okay. So thank you so much, Dr. Kurutulan. You're with us. So yes, thank you so much, ma'am. You have been listening to us since the start, and I think towards the end, definitely, jo sentiments and they do sort of come out. And I believe the debate is very right. The developments need to be people-centric. The developments need to be community-centric, and especially when it comes to you have been advocating for this since long, the rights of the people of Balochistan. That's again extremely the top priority of everything. So, ma'am, just aapki reflections on the overall discussion that have happened, and any points after which I'll come to final for the final conclusion, but for the final vote of thanks. But over to you, Dr. Kuratanan. Thank you so much for joining us. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। मुझे जब मैं सारी बातें सुन रही थी तो मुझे अपनी रेलिवेंसी जरा कम नजर आई इस फोरम के अंदर, क्योंकि इट इज अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, इट इज अबाउट रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज अबाउट इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कि बड़े पता है सबको। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं इसमें क्या बात करूं। डॉक्टर फैज के बाद तो बात ही नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ने ही हैज हिट इट ऑन द नेल, मगर उन्होंने बहुत ही नरमी के साथ बातें की हैं और बहुत सारी कही भी हैं बात और नहीं भी कही है, मगर समझना सोचने वालों के लिए बहुत पैगामात हैं डॉक्टर साहब के मैसेजेस में। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि मैं बलूचिस्तान की नहीं हूँ। मैं 40 साल से कराची से बलूचिस्तान गई थी, मैं कराची की हूँ। और मेरा जो तजुर्बा नहीं डॉक्टर साहब, आप बलूचिस्तान के, हम आपको कभी भी ये नहीं समझते आप बलूचिस्तान के नहीं। ये आपका बड़ापन है सर, आपका बड़ापन है। मगर ये कि सर मैं फोरम से कहना चाहूंगी कि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हमने सिर्फ इस सीपैक को हमने उस तरह से डिफाइन किया, अगर जैसे कि दुनिया हमें ऐनक पहना रही है, हमें दुनिया एक बसीरत हमें दुनिया दे रही है, वरना बलूचिस्तान में ये तमाम चीजें जो इस वक्त डिस्कवर होके सब दुनिया आप लोग बयान कर रहे हैं, हम सब, ये तो हमेशा से थी, ये कोई नई थोड़ी है, दे वर ऑलवेज देयर। मगर हमें जिस ऐनक से हमें दिखाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस। तो ये फिर से खतरा ये है, और बिल्कुल है, हमारे सामने इस वक्त दुनिया में तमाम तर तजुर्बात हैं कि जब दुनिया के वेस्टर्न इंटरेस्ट ने मुकामी लोकल या दुनिया
ये वेस्टर्न इंटरेस्ट ने जहां पे भी उनको रिसोर्सेज नजर आए हैं तो वो कीनिया की तरह मुल्क को बना देते हैं, वो नाइजीरिया की तरह से बना देंगे। और मैं 2 सालों के बाद आगे आप सब चीज समझ सकते हैं। सिर्फ एक वाहिद वजह से हुआ, ये नहीं कि इंटरनेशनल बिजनेसेस और शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, हर बिल्कुल होनी चाहिए। दुनिया में हमेशा से होता था, हमेशा से नेशन स्टेट बनने से पहले भी तिजारतें होती थी। और कुछ ये कि बलोचिस्तान जिसकी हिस्ट्री जो है वो हजारों साल में फैली हुई है, उसकी सिविलाइजेशन, और हमने उस सिविलाइजेशन को नहीं समझा है बलोचिस्तान के खत्ते के, और इसकी हिस्ट्री नहीं समझी है, इसके लोगों को नहीं समझा है। वजह इसकी ये है कि जो मैंने कीनिया और बाकी का तो मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, हम फिर से हम ब्लाइंड फोल्डेड उस ऐनक के जरिए जा रहे हैं, सीपैक के जरिए, जो कि बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है सीपैक, मगर किसके लिए? ये अपॉर्चुनिटी सर्व किसको करेगी? मैंने फिर से कह रही हूँ, कीनिया, नाइजीरिया और बाकी सब आपको पता है सब। तो हमें हमें ये दिखाया जा रहा है कि बिजनेस, रिसोर्सेस और जबरदस्त तरक्की आएगी। तो फिर कीनिया और नाइजीरिया शुड हैव बीन वन ऑफ द टॉप मोस्ट इकोनॉमीज, उसके लोग जो होते वो फ्लरिश कर रहे होते। हम सर इस पूरे उसके अंदर एक बहुत मिसिंग लिंक मैं देखती हूँ, और मुझे बहुत खुशी है आज आप लोगों ने ये कहा कि मैं इसमें बात करूं। सर, बलूचिस्तान को एंथ्रोपोलॉजिकली स्टडी नहीं किया जाता। कोई भी इतने बड़े बड़े वेंचर्स आते हैं, इट्स अ प्लेस फॉर एंथ्रोपोलॉजिकल बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। आप एंथ्रोपोलॉजी को, आपने इतने बड़ा प्रोजेक्ट है सीपैक, इसमें से एंथ्रोपोलॉजी बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी ऐनक जो है वो सिर्फ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज की है बस। अगर हम इसके अंदर एंथ्रोपोलॉजिकल बेसिस नहीं देंगे, जो कि बड़ा यूनिक बना देगा सीपैक को, और बाकी मुल्क को बलोचिस्तान से जोड़ देगी वो जो अंडरपिनिंग है एंथ्रोपोलॉजिकल। और बाकी पाकिस्तान सिर्फ सीपैक की वजह से बलोचिस्तान से करीब ना आए, बल्कि अपने लोग हैं, हमारे मुल्क का हिस्सा है, उसकी वजह से आए साथ। ये जो है ये सिर्फ रिसोर्सेज की बिना पे और बिजनेस की बिना पे कौमें और लोग नहीं जुड़ते हैं, कभी भी नहीं जुड़ते हैं। खानदान भी नहीं जुड़ते हैं, भाई भाई भी नहीं जुड़ता है। हमें इसमें इतना अच्छा मौका मिला है सीपैक का। इसके अंदर मैं ये चाहूंगी और मेरी सिफारिश है कि ह्यूज टाइम और रिसोर्सेज एलोकेट करें फॉर एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्वादर, और फिर उसके बाद हम समझ सकेंगे कि एक ट्रेडिशनल ट्राइबल आइसोलेटेड सोसाइटी अरसे से एकदम से ट्रांजिट कैसे कर सकती है अर्बनाइजेशन में। देयर इज कोई क्या तरीका, क्या है वो ट्रांजिशन का तरीका, क्या है? ट्रांजिशन का तरीका बिजनेस नहीं हो सकता है, पैसा नहीं हो सकता है। इट हैज टू बी सोशियोलॉजिकली, एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरपिनिंग चाहिए होगी। वरना हमारे सामने तो है मिसालें, ये जो ये सारे जो ये चीजें बताई जा रही हैं, हमारे सामने इसकी लिविंग मिसालें हैं। कीनिया, नाइजीरिया और मजीद और मुल्क भी हैं। सर, this is what I see. Without a proper, really dedicated, intellectually sound anthropological basis of CPEC, Balochistan is such a great place to be studied anthropologically. और सर, बलूचिस्तान में एंथ्रोपोलॉजी का कहीं डिपार्टमेंट नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इस्लामाबाद में है। अगर इस्लामाबाद के भी लोग अगर बलूचिस्तान को आन के एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी कर लें तो बहुत बड़ा ज्वाइनिंग फैक्टर हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात कही कि काकड़ और बलोच ये देखिए, ये बहुत जबरदस्त उन्होंने सारी बात कह दी है। सर, वी मस्ट यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ CPEC, ऑफ पीपल्स ड्रिवन प्रोग्राम्स। लोग होंगे ना, ह्यूमन को भी तो रिसोर्स माने ना। हम सिर्फ चीजों, ये ह्यूमन रिसोर्स की बात बहुत कम हुई है इसके अंदर। हमने अज्यूम कर लिया है कि जब फाइनेंशियल डेवलपमेंट आएगा तो इंसान खुद ब खुद डेवलप हो जाएंगे। नहीं सर, ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे होता तो सबसे डेवलप और सबसे काबिल और सबसे पता नहीं क्या क्या, जहां सब जाते हैं अपने घर बार को छोड़ के अमेरिका और यूरोप में,
तो वो उन्होंने कभी भी जंगें ना की होती और लोगों को इस्तेसाल ना किया होता, मारा ना होता, पीटा ना होता, किलिंग नहीं की होती। अगर अगर पैसे से और बिजनेसेस करने से एनलाइटनमेंट और डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट अगर हो जाती है, सर दिस मॉडल इज नॉट वर्किंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वी हैव अ ग्रेट चांस एंड वी हैव अ ग्रेट चॉइस ऑफ बलूचिस्तान, जो अभी तक वर्जिन लैंड है। फ्रॉम यू कैन मेक हाईली इनोवेटिव programs and a model for the world कि जब आप एंथ्रोपोलॉजिकल बेसिस किसी बिजनेस को देते हैं तो उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। और मैंने सर पिछले 40 साल में कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। मैंने सिर्फ लोगों के साथ रह के सीखा है, लोगों के साथ काम किया है। और यकीन जानिए, ना मैं वहाँ की जबान जानती हूँ, ना मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने विद इन 5 years 92 to 97 में जब इनको 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 जोड़ा प्रोजेक्ट है, हमारा वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, इन्होंने लेस देन 5 years में 2200 गर्ल्स स्कूल्स बना के 3 लाख लड़कियां एनरोल कर दी, इसी अवाम ने, अक्रॉस बलोचिस्तान, इन्हीं लोगों ने। और वो स्कूल इन्होंने और वो जगहें ओन की हैं और उसको चला रहे हैं, बिकॉज इट इज देयर्स। वो उन्होंने बनाए, वो उन्होंने क्रिएट किया है। सर आखिरी बात ये कि मैं ये समझती हूँ बलूचिस्तान सीपैक से कि जो लोग डेवलपमेंट में बसीरत और उसके आगे हैं, वो तो होंगे हमेशा इसके ड्राइविंग फोर्सेस में। और हम प्रपोज कर रहे हैं कि लोकली जो है हमें टेक्नीशियंस चाहिए, प्लम्बर्स चाहिए, यानी कि थिंकर्स कोई और होंगे और प्लम्बर्स और मजदूर और ये कैटेगरी कोई और होगी। आप ऑलरेडी पहले से डिवीजन पे हैं, मेंटल, आप जहनी तौर से डिवीजन पे हैं, जिसको कि आप नहीं है, हम वो मॉडल जहां से ले रहे हैं वो हमें यही ऐसे ही बताते हैं। आप इंटेलेक्ट को और टेक्निकल लोगों को अलग अलग कर रहे हैं, जबकि किसने कहा कि प्लम्बर जो है वो यूनिवर्सिटी एजुकेटेड नहीं हो सकता? ये कहाँ लिखा है? ये किसने हमें बोला है? मैं आपको इतने 1000 बच्चे बलूचिस्तान के दिखा दूं जो प्लम्बर हैं और मास्टर्स हैं, जो मिस्त्री हैं और बैचलर्स हैं। मैं इतने हजारों बच्चों को आपको दिखा सकती हूँ। ये हमें अपने पुराने मिथ्स तोड़ने पड़ेंगे, हमें अपने अपने मॉड्यूल खुद बनाने होंगे, और वो मॉड्यूल्स बलूचिस्तान को स्टडी करके बनाने होंगे कि इसका यूथ कैसा है, उसके लोग कैसे हैं, उसकी ट्रेडिशंस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो तब्दील कब होते हैं। सर आपको मैं क्या बताऊं, बलूचिस्तान के लिए लिखा, हर कोई कहता है लड़कियां औरतें बैकवर्ड हैं। मुझे आप ये बताइए, जब मैंने एजुकेशन का काम शुरू किया तो मुझे यही कहा जा रहा था कि भाई टीचरें नहीं है, 8वीं पास भी नहीं है। जब मैं घरों में गई, कोई 4000 घरों में, मुझे 3000 लड़कियां मिली जो कि 8वीं और 10वीं पास थी और घर बैठी हुई थी। ये 93 और 92 की बात कर रही हूँ। मैंने जब उनसे पूछा कि बेटा तुम लोगों ने पढ़ा कहाँ से, यहाँ तो गर्ल्स हाई स्कूल है ही नहीं कहीं पे, तो तुमने ये पढ़ा कैसे? उन्होंने कहा हमने, हमारे बाप, हमारे भाई, हमारे चचा ने, हमारे जो रिश्तेदार मर्द थे जो बॉयज स्कूल में पढ़ाते थे, वो बुक्स लेके आते थे और हमें उन्होंने घर में पढ़ाया, और बॉयज स्कूल से हमें हमारा इम्तिहान दिला दिया हमें, बॉयज स्कूल में, अपने स्कूलों में ले। तो हमने कहा कि तुम लोगों नाम नहीं है डेटा में, क्यों नहीं मुझे मिले कि भाई यहाँ लड़कियां हैं टीचर बनने के लिए? उन्होंने कहा बाजी क्योंकि बॉय स्कूल से था ना, तो हम लोगों का नाम सबका बॉय, लड़कों के नाम के साथ हमने इम्तिहान दिया उधर, तो हमारा नाम लड़की वाला गया नहीं ऊपर। तो हमने जाके फिर दोबारा से वो नाम, लुक एट द पैशन, बिल्कुल, लुक एट द पैशन। यस, कुछ नहीं है, उसके बावजूद ये लोग रुकते नहीं है। सीपैक हो या नहीं हो, ये अपने ट्रेडिशन, अपने पेस पे चलेंगे, बहुत अच्छा चलेंगे, लेकिन सीपैक इज सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी सर। मैं पूरे पाकिस्तान से इंतजार करती हूँ, इसको रूटेड करें कम्युनिटी के अंदर, अवाम के अंदर, और उनसे आप सीखें, उनसे आप लें। ये जो हमें ऐनकें पहना रहे हैं ना बाहर से, इधर उधर से लोग, ये सारे फेल्ड मॉडल हैं, ये ह्यूमनली फेल्ड हैं, एट ह्यूमन लेवल ये सब फेल्ड हैं। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर कोरतलन जी। डॉक्टर फाइज का भी है। डॉक्टर फाइज, जस्ट बिफोर आई थिंक, लेट मी जस्ट वेरी क्विकली अगेन द रीजन, डॉक्टर फाइज जस्ट डॉक्टर मैं फाइज सिर्फ एक मुख्तसर से बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा बाद में शायद मौका ना मिले, क्योंकि डॉक्टर साहिबा की मौजूदगी में मेरे लिए वैसे मुनासिब नहीं था,
मैंने इसलिए भी हाथ हल्का रखा कि मुझसे ज्यादा है बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करने और समझने वाली है। तो मुझे इनसे 100% इख्तिलाफ है कि वो कहते हैं कि मैं बलूचिस्तान की नहीं हूँ। कराची ने इनको जन्म जरूर दिया है, इनका मरना जीना हमारे साथ रहा है, इसने जिंदगी के खूबसूरत दौर, जिंदगी के असल दौर हमारे साथ गुजारे हैं और इनका मरना जीना हमारे साथ है। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो किसी ने कहा कि भाई मुझे कौम चाहिए, उसने कहा पढ़ी लिखी माएँ मुझे दे तो मैं आपको पढ़ा लिखा कौम देता हूँ। मुझे डॉक्टर साहिबा मुझ जैसे लोगों के लिए हमारे मेंटोर रही है। ये वो शख्सियत है जिसने बलूचिस्तान को पढ़ी लिखी बहनें, बेटियां और माएँ दी है। अगर दुनिया में बलूचिस्तान में किसी का एहसान है तो वो शी इज वन ऑफ देम, जो दुनिया की टॉप 2 और 3 है। तो मेरा ख्याल है अब हमने बलूचिस्तान के केस लड़ने की तो पूरी कोशिश की है। तो मैं सिर्फ इस बात पे कहना चाहता कि मैडम कल भी हमारी थी, आज भी हमारे और कल भी हमारे होगी। डेफिनेटली सर, इंशाल्लाह। सर नहीं, एग्जैक्टली द रीजन कि हमने आपको भी, मैडम डॉक्टर साहिबा को भी इसीलिए बुलाया, बिकॉज वी एक्चुअली वांटेड कि joint how to see take this collectively forward, but definitely there is a good way, hopefully inshallah things will get better. हम सर आपसे भी लाजमी यहाँ पे क्यों नहीं लेते, but just in the interest of time let me come back to Johar Saab for final concluding and his final interventions before we after which we close the session. Sir, thank you. Thank you. I think we had an excellent session, with, of course, a diverse range of opinions. To begin with, a very comprehensive presentation by Dr. Hassan Dawood. We invite him quite frequently at IRS as well. And he's one of the experts and always comes up with great ideas. And he understands the subject perhaps better than most. Then Dr. Faiz Kakar Saab, some very thought-provoking remarks. And I think definitely we need to really examine what he said, because without getting the perspective of Balochs themselves, there is no way that CPEC could be a success in Balochistan. And also, without involving the people of Balochistan fully, we cannot make Balochistan the hub of connectivity that we envision. Dr. Kurutulan came up with a unique perspective. I like that anthropological development model or anthropological underpinning. It's very interesting. Definitely, development is a lot about culture as well. And that is why some countries do so well without any natural resources, while there are many countries in the world which bungle up all the natural resources they have. For instance, Dr. Saba mentioned Nigeria, which has the 5th largest reserves of oil in the world and still is struggling. On the other hand, Dr. Saba, by the way, Kenya is doing actually slightly better than Nigeria and may not be a great example of inefficiency, because per capita, they have far sort of less natural resources, particularly in terms of minerals in that domain. But they still have the same per capita of Nigeria, which is about $6,000 purchasing power parity. But yet, yeah, you're right, the potential is far greater there too. Then Engineer Ahad Nazir Saab, with his very matter-of-factly presentation, I think he raised very many relevant points. And the session was moderated very well by our dear friend here. My compliments. And I think the level of participation, sometimes these discussions can be boring, but I saw everyone very much involved and sort of, great listeners. That's what the speakers always want. And some very apt questions, which were, again, in many ways thought-provoking. So I personally enjoyed a lot. I learned a lot. I think it was a very productive session, but we need many more of these, because this is a very complex subject and a subject which really needs much greater attention than it is getting now.
I would stop here, and I would like to thank of course, I would like to thank and compliment SDPI for taking this great initiative, all the speakers, the distinguished speakers, for the very valuable contributions, and for all the audience present here for their most useful inputs, as well as for very attentive listening. So with these words, I'd like to thank you all again, and I would invite you all to join me in a big hand of applause for all our speakers. Thank you. So मैं जी डॉक्टर साहिबा प्लीज जी जी बस जी मुझे सर जब बोल रहे कि अभी कंक्लूड कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था सुनना, और मेरे जहन में एक लास्ट स्टेटमेंट आया था, अगर दिल चाहा शेयर करूं। सीपैक जो है वो कोर बन सकता है हमारा नेशन बिल्डिंग में। Wonderful. Wonderful. I think that's a great statement. Yes, sir. We really appreciate that. Thank you, Dr. Saab. Thank you so Thank much. you, sir. Thank you, sir.